everyone, welcome or welcome back to the channel that is AMS MBBS lectures. In today's session, I'm going to continue CVS microbiology, the viral infections under the topic. And right now, I'm going to discuss a very important topic, and that is dengue, guys. Okay. So now in the previous session of the topic, I have covered the introduction to what is viral hemorrhagic fever, the definition. It's a very short session, okay, in which I've described the definition of VHF and which all groups of viruses are included under VHF. Right now, we are going to mainly understand what is dengue. Now, before going into the details of dengue, I have a short incident that happened with me during my own second year, guys. It was the first internal examination of microbiology, and of course, CVS microbiology was also part of the syllabus. And I studied a lot of topics, but I skipped the viral part. I didn't study HIV. I didn't study viral hemorrhagic fever. Okay, and I was expecting and hoping that malaria should be the long question, but aisa nahi hua, and I got dengue as a long question. Okay, so the same thing should not happen with you. With that, let's understand dengue in complete detail under the following subheadings, guys. Again, so I'm going to describe dengue as first we're going to look into the virus. Okay, the dengue virus. Okay, then we're going to look at the vector which is responsible for the spread or transmission of dengue. Third thing, pathogenesis of dengue. Fourth, I'm going to explain you the clinical manifestation, the clinical features. Okay, but यहाँ पे हम लोग उसका clinical classification is what we're going to study. Then we have your lab diagnosis, the treatment and prevention, and lastly a note on dengue vaccine, guys. Okay, so let's understand the virus first. Okay, so which virus is causing dengue? So it is caused by dengue virus only, guys. Okay, now this is belonging to which group? So okay, it is belonging to the arboviruses. Okay, it is belonging to the group arbovirus, guys. Okay, it's the most common. Dengue is the most common arbovirus found in India, guys. Okay, which family? So it is belonging to the family Flaviviridae. Okay, it is belonging to the family Flaviviridae. Okay, and of course, dengue virus is an enveloped virus. Okay, it is an enveloped virus, and okay, it is having a single-stranded RNA into it. So it is also an RNA virus. Okay. Now, dengue virus is having importantly 4 serotypes. Total 4 serotypes होते हैं. That is Den 1 to Den 4. Okay, Den 1 to Den 4. 4 serotypes होते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं. Now, recently, guys, okay, in the year 2013, the 5th serotype, that is Den 5, was also discovered. Okay, Den 5 was also discovered in Bangkok, guys. Okay, in Bangkok in the year 2013. Okay. Now, 5th serotype is something इससे related infections India में अभी तक नहीं हुए हैं. So, with respect to India, we have the 4 important serotypes, that is Den 1 to Den 4. Okay. So, this was just the details of the dengue virus. Now, let's understand the vector that is responsible for transmission of dengue. And every one of us know the principal vector is a mosquito. And which mosquito? So it is the Aedes aegypti, guys. Okay, which mosquito? It is the principal vector is your Aedes aegypti, guys. And the second important vector, that is your Aedes albopictus, guys. Okay, followed by Aedes aegypti, we have Aedes albopictus. Okay, now let's understand some characteristic pointers with respect to it, guys. Okay. एडिस इजिप्टी जो है इट इज अ नर्वस फीडर, यानी कि इट इज गोइंग टू बाइट द इंडिविजुअल रिपीटेडली टू मोर देन वन पर्सन in order to complete its blood meal, whereas when it comes to Aedes albopictus, okay, it is the one that is an aggressive and concordant feeder, यानी कि it has the ability to complete the blood meal within a one single go, guys. ठीक है, तो सिंपल है, दैट इज ये मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट पर्सन को बाइट करेगा एडिस इजिप्टी. सो इट इज अ मोस्ट ओके, इट इज कंपैरेटिवली अ मोर एफिशिएंट vector when it comes to transmission of dengue, and on the other hand when it comes to albopictus it is a less efficient vector when it comes to transmission, because ये एक ही टाइम individual को bite करके it can complete its blood meal, guys. ठीक है, and with respect to its distribution in the area, guys, Aedes aegypti is something that is residing in your domestic places, whereas Aedes albopictus is the one that is residing in your peripheral urban areas. Understood with this concept about the vectors? Now one more property with respect to this thing. देखो, for the mosquito that is your Aedes, guys, to transmit the infection, है ना, mosquito के खुद के अंदर भी वायरस होना चाहिए, तभी जाकर के वो ट्रांसमिट करेगा, then only it can spread the infection to humans. Yes or no? अब mosquito में infection कैसे आया है? So that is what you have to understand over here. Simple है, a normal mosquito once it will feed on a viremic patient, okay, जब वो एक viremic patient पे feed करता है, after a duration of 8 to 10 days, guys, that is what is called the extrinsic incubation period, the mosquito that is Aedes will become a infective, guys. ठीक है, and एक बार mosquito infect हुआ है, it will remain infected for life. Okay, and also one more property that
mosquitoes have is they show trans-ovarial transmission of the virus. Okay, so once they become infected, they can pass it, okay, to their offsprings as well. That is trans-ovarial transmission of the virus is also seen when it comes to mosquitoes, guys. Understood? This was some additional points with respect to Aedes. Next thing, that is the transmission cycle, guys. Again, now when I explain transmission cycle over here, the principal reservoirs for dengue virus is your man and mosquito. Okay, man and mosquito. And mosquito kaun sa hai? So Aedes mosquito, guys. Okay, these are the principal reservoirs. Now for the 4 serotypes, that is Den 1 to Den 4, okay, they do not involve any other animal, guys. Okay, इनके transmission cycle के अंदर ना, they do not involve any other animal. But Den 5, okay, ये जो होती है, it follows the sylvatic cycle. Okay, it follows the sylvatic cycle. Understood the concept, okay, about transmission cycle? Next thing. So that was all about the vector, okay. Next, we are going to discuss your pathogenesis of dengue. And when it comes to pathogenesis of dengue, it's simple. There are two things, that is primary dengue infection and secondary dengue infection. What is primary dengue infection, guys? जब भी, okay, a person is infected with a dengue for the very first time, okay, if an individual is getting infected with a dengue for the first time, guys, with any one of the serotype, ठीक है, any one of the serotype पे जब first time infection होता है, that is what is called primary dengue infection. ठीक है. Now after some time, after some months to years later, guys, if that individual is getting another infection, okay, with some another serotype, okay, यानी कि एक दूसरे serotype के साथ जब वो second time infect होता है, it will result into a more severe form of dengue, guys, and that is what is called secondary dengue infection. Now why the response is severe during secondary infection? Why the response is severe? Let's understand it. Because the रीजन इज एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू डेंगू, गाइस. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. जब भी डेंगू का इन्फेक्शन होता है, गाइस, ठीक है, दो टाइप के एंटीबॉडीज जनरेट होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज दैट आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. द फर्स्ट इज द न्यूट्रलाइजिंग सेट ऑफ एंटीबॉडीज एंड वी हैव नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज. दो टाइप की होती है. न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो होती है वो प्रोटेक्टिव होती है नेचर के अंदर, ठीक है, एंड दे आर जनरेटेड और दे आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट बोथ द इन्फेक्टिव सीरोटाइप एज वेल एज द अदर सीरोटाइप. आई मीन टू से, सपोज जब प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ था, गाइस, ठीक है, तो सीरोटाइप 2 के थ्रू हुआ था, डेन 2 ने इन्फेक्ट किया था, तो डेन 2 के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनेगी, डेन 2 के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज जनरेट होगी, दैट इज द इन्फेक्टिव सीरोटाइप. एंड अदर सीरोटाइप, दैट इज योर डेन 1, 3 एंड 4 के अगेंस्ट भी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जनरेट होती है. ठीक है, तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू गिव यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब जो इन्फेक्टिव सीरोटाइप के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती है, दीज एंटीबॉडीज आर गोइंग टू लास्ट फॉर लाइफ लॉन्ग एंड प्रोटेक्शन ऑल्सो स्टेज फॉर लाइफ लॉन्ग. सिंपल. Whereas जो दूसरे सीरोटाइप्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती है न्यूट्रलाइजिंग टाइप की, दे विल बी लास्टिंग फॉर ओनली सम टाइम एंड द प्रोटेक्शन विल डिमिनिश ओवर फ्यू मंथ्स, बिकॉज उन लोग का ड्यूरेशन ही कुछ समय के लिए है, तो प्रोटेक्शन भी कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली डिमिनिश हो जाएगा. एंड जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती है, दे प्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली अगेंस्ट द अदर सीरोटाइप्स एंड दे आर हेटेरोटिपिक इन नेचर, गाइस. Understood the concept of this thing? Now let's understand what happens, okay, during the first serotype infection. तो जब भी हम लोग का प्राइमरी इन्फेक्शन हो, यानी कि इन्फेक्शन विद द फर्स्ट सीरोटाइप, योर नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनी. नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मतलब किसके अगेंस्ट? एंटीबॉडीज अगेंस्ट द अदर सीरोटाइप्स. ओके, अदर सीरोटाइप के अगेंस्ट हम लोग की एंटीबॉडीज बनी है. Now these antibodies जब secondary infection होगा, है ना, after some time whenever a secondary infection is taking place, it will bind to the second serotype. Okay, it will bind. ये जो non neutralizing antibodies बनी है, they will bind to the second serotype during the secondary dengue infection. अब देखो गाइस, ये नॉन न्यूट्रलाइजिंग टाइप की है ना, तो ये जो सेकंड सीरोटाइप के साथ बाइंड भी करेगी तो उसे न्यूट्रलाइज नहीं करेगी. इंस्टेड इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गाइस. ठीक है, ये प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम. किसको प्रोटेक्ट करेगी? सेकंड सीरोटाइप को. हु इज प्रोटेक्टिंग इट? नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो हम लोग के प्राइमरी इन्फेक्शन के वक्त बनी थी अगेंस्ट द अदर सीरोटाइप्स. ठीक है, नॉन न्यूट्रलाइजिंग वाली है ना, तो इट इज नॉट गोइंग टू न्यूट्रलाइज इट, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम. एंड हाउ? इट इज सिंपली गोइंग टू इनहिबिट द बाइस्टैंडर बी सेल एक्टिवेशन को इनहिबिट करने वाली है अगेंस्ट द सेकंड सीरोटाइप. नाउ व्हेन आई से इट इज इनहिबिटिंग द बी सेल एक्टिवेशन, बी सेल्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी कि सेकंड सीरोटाइप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट नहीं होंगी, है ना. एंड दिस एंटायर फिनोमेना, है ना, इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, गाइस. ADE. Understood till here? Then comes into picture the next point, that is okay, see, apart from this protective action and antibody dependent enhancement, ये साथ ही साथ ना एंटीबॉडीज जो होती है ना नॉन न्यूट्रलाइजिंग वाली, दे विल बाइंड टू द सेकंड सीरोटाइप एंड विल प्रमोट द रिक्रूटमेंट ऑफ योर मोनोन्यूक्लियर सेल्स, एंड बिकॉज ऑफ दीज मोनोन्यूक्लियर सेल्स देयर इज रिलीज ऑफ द साइटोकाइन्स. एंड दिस इज द okay point that will explain you the severity during the secondary dengue infection, that why during secondary dengue infection you get the
more severe response because of two things, that is release of cytokines and most importantly it is the antibody dependent enhancement, guys. Understood the whole pathogenesis and the reason of the severity during the secondary dengue infection, guys. Okay. Okay, now next thing, that is factors which are determining the outcome. ठीक है, देखो गाइस पहली चीज है दैट इज द इन्फेक्टिंग सीरोटाइप, है ना। अब देखो हमको पता है दैट इज डेंगू के सीरोटाइप कितने हैं, देयर आर 4 सीरोटाइप्स, डेन 1 टू डेन 4। उसमें से जो हम लोग का सेकंड सीरोटाइप है दैट इज योर डेन 2, ओके, इज कंसिडर्ड टू बी एज द मोस्ट डेंजरस सीरोटाइप, गाइस। ओके, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस सीरोटाइप। अभी जस्ट हम लोगों ने पैथोजेनेसिस में स्टडी किया था दैट फॉर डेंगू टू डेवलप, ओके, फॉर डेंगू टू come into picture, there is primary infection followed by secondary infection. So a combination you have to remember, or the sequence of infection with serotypes is what you have to remember. That is the primary infection हुआ है den 1 के साथ, and after some time if this den 1 serotype infection is followed by the second serotype infection that is den 2 के साथ होगा, this combination is considered to be the most severe form of dengue. Yes, it is considered to be the most severe form of dengue. Okay, it will result into the most severe form of dengue, guys. Okay, इन्फेक्शन प्राइमरी इन्फेक्शन में फर्स्ट सीरोटाइप का इन्फेक्शन हुआ है एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन में सेकंड सीरोटाइप के साथ इन्फेक्शन हुआ है। दिस सीक्वेंस इज रिजल्टिंग इनटू द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ डेंगू, गाइस। ठीक है, देखो एज ऑफ सच एज, ओके, देयर इज नो रिलेशनशिप, बट ओके विद रिस्पेक्ट टू डेंगू किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है डेंगू, लेकिन एक चीज है दैट इज इन चिल्ड्रन, ठीक है, इन चिल्ड्रन लेस देन 12 ईयर्स ऑफ एज, ओके, चिल्ड्रन लेस देन 12 ईयर्स ऑफ एज और 12 ईयर्स ओल्ड वाले बच्चे जो होते हैं लेस देन, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप सिवियर डेंगू, गाइस। ठीक है, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप, okay, severe forms of dengue like your dengue hemorrhagic fever and your dengue shock syndrome. Understood these factors? Now there is also one relationship, that is dengue and pregnancy का relationship है, that is देखो dengue can be transmitted, okay, there is perinatal transmission possible है dengue में, है ना, mother to fetal transmission is possible, यानी कि during the peripartum period, यानी कि during the pregnancy वाला period, if the mother is getting infected with dengue, then there are chances that newborn will also have the symptomatic infection, okay. Yes, because of these two reasons, okay, newborn can also have symptomatic infections, and it is characterized by conditions like fever, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट, ascites और प्लूरल इन्फ्यूजन्स, ओके, ऐसी टाइप की कंडीशंस हो सकती है स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट अ कोरिलेशन बिटवीन डेंगू एंड प्रेगनेंसी। Okay, so we are done with pathogenesis. Now let's understand the clinical classification. ठीक है, so see clinical classification when I'm saying, देखो अगर question आता है to write the clinical features of dengue, तो बेसिकली हम क्लिनिकल फीचर्स को क्लिनिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के थ्रू स्टडी करेंगे यहाँ पर। ओके, so there are two important classification system, that is the traditional one, the 1997 WHO classification system, and the second one is your 2009 WHO classification system. According to the traditional classification system, dengue is divided into 3 stages, okay, as your depending upon the clinical features, guys. We have dengue fever, we also have a condition called as your dengue hemorrhagic fever, that is DHF, and we can have the third stage, that is your dengue shock syndrome, that is DSS. And according to the 2009 WHO classification, we have only 2 categories, that is your dengue with or without the warning signs, and we have severe dengue. Understood the classification? Let's have a look in both the, okay, let's understand both the classifications separately. Okay, now before going, okay, there are a lot of symptoms under each stages, guys. Okay, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा ऑन द फर्स्ट गो, बट थोड़ा बार बार इफ यू गो थ्रू इट द सेम टॉपिक, इफ यू जस्ट गो थ्रू इट once or two, it would be all clear into your head. Okay, so let's understand the traditional classification. The very first stage, that is your dengue fever. Okay, so dengue fever के अंदर what do you expect? Patient would be having the first thing, that is an abrupt onset of high fever, है ना। और ये जो हाई फीवर होता है ना डेंगू के अंदर, इसके कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स भी दिए हुए हैं, एज योर biphasic fever, or it is called as a breakbone fever or saddleback fever. These are just some fancy names to describe the fever that takes place in dengue, guys. ठीक है, onset कैसा होता है फीवर का? abrupt है। Okay, second thing, patient may have rashes. Which type of rashes? Rashes would be maculopapular rashes, guys. ठीक है, and region क्या है? तो they would be at your chest and the upper limbs के ऊपर ही हो गए rashes, guys. ठीक है, then apart from rashes, they can be muscle and joint pain.
So please remember these important three things, that is, if the patient is having fever, ठीक है, rashes and muscle and joint pain. Apart from this thing, okay, we can have frontal headache हो सकता है ना, lymph node का involvement हो सकता है, that is lymphadenopathy. There can be retroorbital pain, guys, and there would be those basic prodromal symptoms like loss of appetite, nausea and vomiting जैसे symptoms भी हो गए. But main चीज जो है, that is your high fever. एक चीज याद रखना है, rashes is very important and your muscle and joint pain is what you can remember. बाकी क्या है, we have headache, okay, we have lymph involvement, retroorbital pain and some okay symptoms like loss of appetite, nausea and vomiting जैसे symptoms हो सकते हैं. Understood? अगर ये symptoms है तो we are dealing with a case of the first stage, that is your dengue fever. Next thing, that is dengue hemorrhagic fever. From the name it's clear, right? Hemorrhagic fever यानी कि bleeding manifestations जिसमें होने वाले हैं, है ना. तो suppose if the patient, of course dengue का case है तो fever तो होना ही है ना. तो first symptom states that a high grade का continuous fever होगा patient को, ठीक है. Liver can get enlarged, guys, that is hepatomegaly can be a thing, ठीक है. Then your platelet count कम हो जाएगा, it would be less than 1 lakh per mmq. Platelet count कम होना, that is called as thrombocytopenia, ठीक है. hematocrit और your packed cell volume, okay, will increase by 20%. normal जितना भी होता है उससे 20% increment, okay. So elevation in hematocrit and a decrement in the platelet count is again a feature defining dengue hemorrhagic fever, guys, ठीक है. And of course evidence of hemorrhage. Now evidence of hemorrhage, we can do the tourniquet test, okay. Tourniquet, if you all know, it is just a rubber tube or kind of a band, guys, that you have to tie around the arm of the patient, okay, and you have to wait. And अगर आप लोग को after tying the tourniquet, okay, if you are getting more than 20 petechial spots per square inch area in the cubital fossa, it is a positive tourniquet test and it can be taken as an evidence of hemorrhage, okay. And we can also look for the presence of spontaneous bleeding spots, okay, from your skin, nose, mouth and gums, guys, okay. ये सारी जगह से अगर bleeding हो रही है या तो tourniquet test positive आ रहा है, these all can be taken as evidence for hemorrhages, guys, ठीक है. तो अगर ये सारी चीजें present है तो it is called as your dengue hemorrhagic fever. And suppose, okay, now they are stating all the symptoms of dengue hemorrhagic fever, okay. So all the symptoms of, not all basically, मतलब ये सारे जो symptoms है dengue hemorrhagic fever के, these along with the symptoms of shock, okay, that is a rapid and weak pulse, okay, narrow pulse pressure or the patient is in hypotension, okay, the skin has become cold or clammy, guys, okay, skin कैसी है, cold and clammy skin हो गई है, and restlessness है patient को. All these symptoms of this thing along with symptoms of dengue hemorrhagic fever, the condition is called as dengue shock syndrome, ठीक है. So please remember, dengue shock syndrome is not मतलब कि सिर्फ ये shock के symptoms present है, no, along with the shock symptoms there can be symptoms of dengue hemorrhagic fever जो हमने अभी study किया है. Understood? So this was the traditional classification of WHO given in the year 1997, guys. Understood? Let's go and understand the second classification system, that is the 2009 WHO classification. इसके हिसाब से दो categories में divide हो जाता है, and that is your dengue plus or minus warning signs, and second category is your severe dengue की होती है, ठीक है. Now let's understand this okay category, the first category with the help of an example over here, ठीक है. Suppose the patient is coming you and there is, okay, the patient is now coming with you fever है, ठीक है, and there is also a travel history, or the patient can be a resident of a dengue endemic area, है ना. endemic area के अंदर वो रहता है, यानी कि resident है उस जगह का, और a travel history. तो patient is giving a travel history to a dengue endemic area. Secondly, the patient is presenting with fever, guys, and also suppose I'm saying out of all these criteria that are mentioned over here that I'm highlighting, ठीक है, इसमें से कोई भी दो क्राइटेरिया अगर पॉजिटिव आती है, we will label the patient as a case of probable dengue, okay, we will label the patient as a case of probable dengue, ठीक है. either the patient is a resident, okay, or there is a travel history to a dengue endemic area, patient is coming with fever, and ये सारे जो क्राइटेरियाज है, ठीक है, all these क्राइटेरियाज यहाँ पे जो मेंशन किए गए उसमें से कोई भी दो क्राइटेरियाज अगर फुलफिल होती है, we label the case as probable dengue, guys, ठीक है. and what are those criteria? It includes your nausea, vomiting, ठीक है, the basic thing, that is nausea and vomiting. Patient can have rash, patient can also have aches and pains, okay. Then patient may have, okay, tourniquet test positive हो सकता है, hemorrhage के signs देखने मिल सकते हैं हम लोग को, ठीक है. ल्यूकोपीनिया, डिक्रीज WBC काउंट, और एनी वार्निंग साइन विच इज मेंशन्ड ओवर हियर, कोई भी वार्निंग साइन अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है. वार्निंग साइन में क्या क्या आता है, तो abdominal पेन और टेंडरनेस कैन बी अ थिंग ओवर हियर, ठीक है. देन देयर कैन बी योर परसिस्टेंट वॉमिटिंग इज अनदर डेंजर साइन और अ वार्निंग साइन, आई मीन टू से. Then clinical fluid accumulation, mucosal bleed, lethargy, restlessness, liver enlargement, that is hepatomegaly, and that too an increment of more than 2 centimeter in the size of the liver, ठीक है. and again वही same चीज that we studied under DHF, that is increase in the hematocrit and a rapid fall in the platelet count, that is thrombocytopenia, guys, ठीक है. if warning signs are present, a strict observation and medical interventions is what is required in patient, guys. Understood all of this thing? तो अगर मैंने बोल रहा हूँ ये सारी चीजें हैं तो we are saying it's a case of probable dengue,
ठीक है. And of course, if you are suspecting of dengue, we are going to order some test, है ना. And from the test अगर वो confirm होकर के आता है कि yes, the patient is having dengue, then we label the patient as a laboratory confirmed case of dengue, guys. Understood? तो पहली कैटेगरी क्लियर होगी, डेंगी विद और विदाउट वार्निंग साइन. ओके, नाउ लेट्स गो टू द सिवियर डेंगी, गाइस. सिवियर डेंगी मतलब इफ द पेशेंट इज हैविंग ओके फीचर्स ऑफ सिवियर प्लाज्मा लीकेज का फीचर है, ओके, और देयर इज सिवियर हेमरेजेस or there is severe organ impairment का signs and symptoms, again we are dealing with a case of severe dengue over here. ठीक है. severe plasma leakage का मतलब वही है यार, shock symptom हो सकते हैं, patient would be having respiratory distress because of fluid accumulation, है ना. these are your sign, okay, symptoms of severe plasma leakage. then severe bleeding. now when we say bleeding severe हो गई है, ठीक है, इतना bleeding हुआ है कि patient is now become hemodynamically unstable है, ठीक है, and the patient is now requiring blood transfusions also. ठीक है, blood transfusions की जरूरत पड़ रही है, patient is hemodynamically unstable, means it is severe bleeding or severe hemorrhage. ठीक है. Next thing, that is the liver enzymes are elevated, your AST ALT levels are elevated, and a patient's consciousness is impaired. मतलब ये क्या indicate करता है कि liver is involved over here, your CNS is involved, and other organs like heart and दूसरे organs का भी function impair हुआ है. That is okay features of severe organ involvement. And if any of these criteria are fulfilled, then definitely we are dealing with severe dengue over here. So I hope this entire thing is clear over here. So let me just summarize. So far हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे. So in general, if we are dealing with a case of dengue वाला patient, guys, ठीक है, क्या क्या presentations हो सकती है, what are features, okay, I'm just summarizing both the classification system over here. clinical features क्या क्या हो सकते हैं patient के ना dengue, ठीक है, dengue वाले को. first thing, fever हो सकता है ना. the fever होना is very very important feature, ठीक है. fever के अलावा there can be muscle or joint pain, okay, patient may have muscle and joint pain हो सकता है patient को, ठीक है, that's again very important. rashes हो सकते हैं, maculopapular rashes can be a thing over here, and some symptoms like nausea, vomiting, okay, severe headache हो सकता है patient को, okay. then there can be loss of appetite, okay, that can also be a feature over here, ठीक है. then some bleeding से related features, यानी कि hemorrhage, okay, bleeding हो सकती है patient को. hemorrhage के लिए what all things we can do, evidence for hemorrhage क्या क्या कर सकते हो, we can perform a tourniquet test or we can look for the spontaneous bleeding from skin, nose, gums, है ना, etc. ये सारी चीजें हम लोग hemorrhage के signs देखने मिल सकते हैं. then if you do a CBC in such a patient, what do you expect? A decrease in the platelet count, that is patient would be having thrombocytopenia, and our platelets less than 1 lakh per mm cube, guys. ठीक है, तो thrombocytopenia would be there on a CBC, and hematocrit would be elevated, okay, elevation in your hematocrit by more than 20% से आपका hematocrit level elevate हुआ है, ठीक है. liver enlargement can also be a thing, guys, okay, liver enlargement, that is hepatomegaly, है ना, increment of that thing. then okay, some features of abdominal pain and tenderness, abdominal pain and tenderness, ठीक है. So I'm just combining all these symptoms जो हम लोगों ने अभी different categories के अंदर study किया था. I'm just combining it all together over here for you all to remember the important ones over here. And of course, if we are dealing with a severe case of dengue, so we are going to get the symptoms of shock. ठीक है, shock के symptoms present होते हैं whenever we are dealing with this thing, है ना, plasma leakage, shock के symptoms, severe bleeding, organ impairment, ये सारी चीजें present हो सकती हैं. Understood? Just a summary of what we have studied under the clinical features of dengue. Okay, so with that we have done the clinical classification. Now let's understand the lab diagnosis. Okay, now for the under lab diagnosis we have the only following 4 things. Okay, we are going to detect the antigen, that is the NS1 antigen detection. We can detect the antibodies, antibody detection test can be done. We can isolate the virus or we can use the molecular methods. Let's understand the antigen detection. Okay, so with respect to dengue, guys, the important antigen that we are using is your NS1 antigen. Okay, NS1 antigen is very important for its detection. ठीक है, हम कौन से टेस्ट okay हम यूज कर सकते हैं, तो there are 2 formats. Okay, either we can go with an ELISA or we can go with an ICT based test for the antigen detection. ठीक है, ICT is your immunochromatographic test and ELISA is an enzyme linked immunosorbent assay, and ICT is a rapid test. Okay, ELISA is comparatively a better test for antigen detection. ठीक है. Now, ये जो होता है एंटीजन डिटेक्शन से, ओके, इट विल हेल्प यू इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द इन्फेक्शन. अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करेगा. व्हाई इट इज हेल्पिंग यू इन द अर्ली डिटेक्शन, गाइस? बिकॉज जो हम लोगों का NS1 एंटीजन होता है, इट इज बिकमिंग डिटेक्टेबल इन योर ब्लड from the day 1 itself. Okay, from day 1, from the first day of infection itself, you can get your NS1 antigen into your bloodstream and it will remain positive up to 7 days. Okay, yes, up till day 7 it will remain positive or remains detectable in the sample. Okay, now
हाईली स्पेसिफिक टेस्ट होता है योर एंटीजन डिटेक्शन. NS1 antigen is a highly specific test. Q, because it will help you differentiate between the different flaviviruses, and also it is very specific to different dengue serotypes. Okay, this was the details about your NS1 antigen detection test. Understood? Next test that we can perform is the antibody detection test. Okay, now before actually going into the details of the antibody detection test, let's understand what are the different types of antibodies which are coming into picture, कब appear होते हैं, कितने समय के लिए रहते हैं. So let's first have a look on that, and then उसके बाद we'll understand the which all tests we can perform for antibody detection. Okay, so during the primary dengue infection, guys, ठीक है, during a primary dengue infections के दौरान we can get your IgM antibodies, that is the okay, this is the antibody which appears first, and later on it is the IgG antibody that will come into picture, guys. ठीक है, तो primary dengue infection की बात हो रही है, IgM antibodies appears first, guys, ठीक है, after a duration of 5 days. Okay, after nearly 5 days of fever you will be getting the IgM antibodies, and it will, okay, disappear within 90 days. Okay, within 90 days of the infection it will disappear as well. Understood? Now when I talk about IgG antibodies during primary dengue infection, ये थोड़ा लेट आती है, ठीक है, it becomes detectable at lower titers. Okay, lower titer levels पे detect होती है, and that too in about 4 to 21 days of illness. Okay, 4 to 21 days of illness के बाद जाकर के detectable होती है, and फिर उसके बाद वो धीरे धीरे increase ही होती है. Okay, and then slowly it will increase. Okay, now let's understand the same concept with respect to the secondary dengue infection, guys. ठीक है, now during secondary dengue infection, guys, what happens is कि जो IgM antibody की थी, मैंने बोला ना IgM antibody 90 days के अंदर अंदर it will disappear, within 90 days के span में disappear हो जाती है ये वाली, है ना. तो IgM antibody titers will become significantly low, and okay, and with the time it will become undetectable, guys, during the secondary dengue infection. ठीक है, we do not have IgM antibodies. ठीक है, now when it comes to IgG antibodies and secondary infection की बात हो रही है, तो IgG के titers जो होते हैं they will rapidly increase, guys. Okay, it rapidly increases, फटाफट बढ़ेगा उसका अभाव. ठीक है, एंड ये जो IgG एंटीबॉडीज बनती है they will cross react with many flaviviruses, and इसके वजह से it can also result into false positive results after recent infections or vaccinations with yellow fever or your Japanese encephalitis infection के लिए vaccination किया है या recent infection है, तो false positive results मिल सकते हैं. Okay, so this was the information regarding the IgM and the IgG antibodies which takes place during your which occurs or are formed during your primary and secondary dengue infection. Okay, now which tests we are going to perform? But before coming to the test, there is an information regarding past infection, guys. ठीक है, so suppose you did you did the antibody detection test हम लोगों ने किया है, patient is asymptomatic, ठीक है, कोई symptoms नहीं है, ठीक है, and आप लोगों ने एंटीबॉडी टेस्ट किया, and you are getting low levels of IgG antibodies into it, है ना. ये चीज याद रखना कि IgG एंटीबॉडीज एक बार बनती है ना, they can remain detectable for over 60 years in the individual. ठीक है, तो suppose I'm saying you're getting low IgG antibody levels, there are no symptoms in the patient over here, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि this is a okay, मतलब past infection, यानी कि patient को एक infection हुआ था उसके पास. It's just a good indicator for past infection. Okay, now let's come towards the part we're going to discuss the test, okay, that we can do for antibody detection. ठीक है, तो बेस्ट टेस्ट जो होता है दैट इज योर मैक एलाइसा, गाइस. ठीक है, आउट ऑफ द टू दैट इज मैक एलाइसा वी कैन परफॉर्म, और वी कैन परफॉर्म द न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट आल्सो. मैक एलाइसा इज कंपैरेटिवली अच्छा और अच्छा टेस्ट होता है. व्हाई? बिकॉज देखो न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट जो होते हैं दोज आर अ बिट कम्बरसम टू परफॉर्म. ठीक है, देखो सेंसिटिव स्पेसिफिक टेस्ट है, दे आर मोस्ट स्पेसिफिक, बट थोड़ा डिफिकल्ट है परफॉर्म करने के लिए, तो कंपैरेटिवली मैक एलाइसा इज अ बेटर टेस्ट, गाइस. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस मैक? ओके, MAC का मतलब होता है इट स्टैंड्स फॉर योर IgM. Okay, this M stands for IgM, A stands for antibody, and C stands for capture. So IgM antibody capture enzyme linked immunosorbent assay, that is what is called MAC ELISA, guys. ठीक है, अब ये जो MAC ELISA के किट्स होते हैं they are provided or supplied by your NIV Pune. ठीक है, नेक्स्ट अब जो ये MAC ELISA होता है, let's understand it's how it works over here. So first of all, it is a double sandwich ELISA, guys. Okay, it is a double sandwich ELISA that you should be knowing. It is a double sandwich ELISA. अब इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं? We take a micro titer plate. Okay, we take a micro titer plate लेते हैं, which is coated with the anti-human IgM antibodies. ठीक है, and this is going to help you capture the human IgM antibodies. अब एक बार antibodies capture हो गई हम लोगों की, we are going to add the एंटीजेंस इनटू इट. विच एंटीजेंस ऐड हम लोग करने वाले? तो डेंगू वायरस के जो 4 सीरोटाइप्स होते हैं उनके स्पेसिफिक एनवेलप प्रोटीन एंटीजेंस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड इनटू इट, गाइस. ठीक है, नाउ एडिशन ऑफ एंटीजन okay into this test is going to increase the specificity of the test. Okay, so this particular antigen addition का जो test होता है it makes the entire test more specific, उसकी specificity बढ़ाता है, and also for
signal enhancement, okay, signal enhancement के लिए we add ABC, that is avidin biotin complex guys, ठीक है, and this addition of this ABC is going to increase the sensitivity of the entire test. Okay, now only limitation of MAC ELISA is that it will show cross reactivity with other flaviviruses के साथ cross reactivity show करती है. The another antibody detection test is your neutralization test guys. इसमें सिर्फ नाम याद रखने हैं. That is your plaque reduction test and the micro neutralization test. And as I already mentioned, that neutralization tests are a bit difficult to perform. They are a bit cumbersome to perform. But again, they are also most specific test for antibody detection guys. Done with antibody detection test. Now, before going into the virus isolation, okay, and molecular methods, okay, let's have a look on what is RDT. Okay, see, rapid diagnostic test यानी कि तुम लोग के जो immunochromatography वाले टेस्ट होते हैं, है ना, these are also available for the detection of your dengue IgM antibodies, NS1 antigen को डिटेक्ट करने के लिए rapid test available होते हैं ना, immunochromatography based test हमारे पास available होते हैं, ठीक है. Now ये जो टेस्ट होते हैं, they are having poor sensitivity and specificity, and इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया था इन द ईयर 2016 स्टेटिंग दैट अगर हम लोग कोई भी डायग्नोसिस के लिए, सॉरी, डेंगू के डायग्नोसिस के लिए, इफ यू आर मेकिंग यूज ऑफ आरडीटी एंड इफ द रिजल्ट आर कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव गाइस, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है फॉर डेंगू, तो वी विल लेबल दैट केस एज प्रोबेबल डेंगू गाइस, एंड वी हैव टू कंफर्म दिस टेस्ट यूजिंग ELISA, ठीक है, कंफर्म करना पड़ता है. वी कैन नॉट रिलाई ऑन द results of rapid diagnostic test because of its poor sensitivity and specificity. Understood? Simple सा concept था, ठीक है. Now next thing, that is your virus isolation guys, ठीक है. अब virus isolation, we can isolate the viruses, okay, this thing can be detected, okay, virus कैसे किधर detect होगा, we can isolate it from the blood, okay, and when, कब okay, कब isolate करना है, so it is detectable in the blood from -1 to +5 days from the onset of symptom. I mean to say, क्या जब भी symptoms की शुरुआत होती है उससे एक दिन पहले से लेकर के 5 दिन बाद तक we can detect the virus in the blood guys, ठीक है, वहां से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. Now once the blood is collected, we will inoculate it into your either into the mosquito cell lines में inoculate कर सकते हैं, that is your C6 or C36 and AP61 cell lines में, और we can simply inoculate it into the mouse guys, ठीक है. एंड ये जो टेस्ट होता है वायरस आइसोलेशन का, दिस इज समथिंग ओनली अवेलेबल फॉर रिसर्च पर्पसेस, ठीक है, ये रिसर्च पर्पसेस के लिए अवेलेबल है, एंड दैट टू इन योर रेफरेंस सेंटर. वी डू नॉट यूज इट ऑन अ रूटीन बेसिस गाइस. Understood the concept of virus isolation. And the last lab diagnostic test, that is molecular method. Now molecular method हम दो चीजों के लिए करते हैं. There are two things for which we can do molecular method. The first thing first, that is it is okay useful for the detection of the specific genes of viral RNA, and the next thing, it is also used for genotype detection guys. Okay, so let's first have a look on the detection of those specific genes of viral RNA guys, ठीक है. अब specific gene देखो, molecular method means we are doing a PCR over here. Which PCR we are going to perform? So we are going to do a real time reverse transcriptase polymerase chain reaction, RT-PCR. okay, यहाँ पे RT is standing for reverse transcriptase. okay, इस मतलब ये परफॉर्म करने वाले हैं ना, तो जब भी PCR करते हैं ना गाइस, we are just going to detect some specific genes को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, पूरा RNA नहीं डिटेक्ट करना है, पूरा RNA टारगेट नहीं करते, only a specific gene. And which is that specific gene when it comes to dengue? Please remember, it is your 3' UTR region, ठीक है. Which region we are targeting? We are targeting the 3' UTR region. The UTR over here stands for untranslated region guys, ठीक है. It is untranslated, यानी कि okay, डेंगू कितने सीरोटाइप्स है? 4 सीरोटाइप्स है ना, तो उन सब के अंदर गाइस ये जो UTR region होता है, 3' UTR region, ये थोड़ा कंजर्व्ड पोर्शन होता है. It is not changed, okay, डिफरेंट सीरोटाइप्स में ज्यादा चेंज नहीं होता, तो दिस इज बिकमिंग वेरी स्पेसिफिक हो जाता है फॉर योर डेंगू गाइस, ठीक है. So we do a real-time RT-PCR and we detect this particular specific gene, that is 3' UTR region के अंदर इस जीन को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है. And of course, if you are doing a molecular method, there it is. Every one of us know it is most sensitive and highly specific test होता है ये, है ना. And it is used for the detection of serotypes detect कर सकते हो. Also, it is helping in your quantification of the viral load within the blood sample. ओके, नाउ डिटेक्ट कब होता है वायरस? ओके, तो वायरस ब्लड में कब डिटेक्ट होता है? अभी वायरस आइसोलेशन में देखा था 1 day prior to 5 days, ओके, आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम. तो -1 to +5 days ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम इज द टाइम जब हम लोग वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं या वायरस के RNA को डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. Now see, molecular test एक highly sensitive specific test है, but suppose if you are getting a negative result from a PCR, and अगर negative result आ रहा है PCR के साथ, तो we label that case as indeterminate. Okay, we do not say that कि करके एक negative PCR means the patient is not having dengue. No, we will label the case as indeterminate. This test has to be confirmed. अगर negative आता है तो serological confirmation is very important. You have to confirm the test
कब करोगे? आफ्टर 5th days, okay, after 5th day of illness we have to confirm the test. Understood? With the first half of molecular method, that is detection of specific genes of viral RNA. नेक्स्ट थिंग, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द जीनोटाइप डिटेक्शन। ठीक है, अब जो हम लोग के सीरोटाइप्स होते हैं डेंगू के, जो 4 सीरोटाइप्स है, 5 सीरोटाइप्स हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे जीनोटाइप्स हैं, है ना। जो 4 सीरोटाइप्स हम पढ़ते हैं, डेन 1 टू डेन 4, ठीक है, दे आर हैविंग सेवरल जीनोटाइप्स इनटू इट। ठीक है, कैसे डिटेक्ट करोगे? ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर मेथड, एंड दैट इज योर मॉलिक्यूलर टाइपिंग। So we can do molecular typing for the detection of all these genotypes, and so far हमारे 13 genotypes are detected guys। अभी जो 13 genotypes हैं हम लोग के टोटल, उसमें okay 3 belongs to the first serotype, 2 belongs to the second, and 4 belongs to each den 3 and den 4। okay, 4 serotype, okay, 4 genotypes of your third and the fourth genotypes have been isolated guys। ठीक है, have been detected, I mean to say। ठीक है, so with this we also mark the end of the lab diagnosis, okay, with respect to dengue guys। I have covered all these important tests, that is antigen detection, antibody detection, virus isolation, and the molecular methods as well। okay, now guys you are just left with the last chunk, that is treatment and prevention with dengue vaccine। ओके देखो, ट्रीटमेंट की बात करो तो डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। यस, वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर डेंगू। ठीक है, देयर इज नो एंटीवायरल थेरेपी। ठीक है, इट इज प्योरली सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव गाइस। ठीक है, पूरी तरीके से सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही होता है फॉर डेंगू गाइस। ठीक है, मेन एम्फोसिस जो होता है ट्रीटमेंट का, दैट इज वी हैव टू मेक श्योर दैट द जो भी प्लाज्मा का लॉस हुआ है वो रिप्लेस होना चाहिए। ठीक है, वी हैव टू करेक्ट ऑल दी इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस को करेक्ट करना है, एंड प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, अगर सिग्निफिकेंटली कम है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही है तो वो भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं पेशेंट को। प्लीज रिमेंबर, डेंगू के लिए कोई भी एंटीवायरल ड्रग इज नॉट अवेलेबल गाइस। ठीक है, इट इज नॉट अवेलेबल। अंडरस्टूड? ट्रीटमेंट इतना ही था। अब प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? फॉर प्रिवेंशन वी हैव आइदर वी कैन वैक्सीनेट द इंडिविजुअल्स, ठीक है, और वी कैन जस्ट डू द मस्कीटो कंट्रोल, है ना, जो उसका वेक्टर है उसी को कंट्रोल कर लो, तो वी आर गोइंग टू गेट दिस थिंग। या तो फिर इंडिविजुअल प्रोटेक्शन मेथड्स वी कैन चेक ओवर हियर। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब वैक्सीन की जब मैं बात करूं अंडर प्रिवेंशन गाइस, ठीक है, देखो डेंगू की बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती है। द ओनली वैक्सीन दैट गॉट लाइसेंस्ड फॉर ह्यूमन यूज इन द ईयर 2015 वाज योर chimeric yellow fever dengue tetravalent dengue vaccine। The CYD-TDV vaccine was something that was licensed for human use, but again ये vaccine India में available नहीं है guys, because of some safety issues it is not available or used in India। it is available in other countries like Mexico, Philippines, etc। ठीक है, लेकिन बहुत सारी vaccines है डेंगू की जिन पे ट्रायल्स चल रहे हैं, एंड उन जो वैक्सीन पे ट्रायल्स चल रहे हैं फॉर डेंगू, उसमें से कुछ इंडियन वैक्सीन भी है जिस पे ट्रायल इज ऑन गोइंग गाइस। ठीक है, एंड दोज वैक्सीन आर, एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, दैट इज योर टेट्रावैक्स dengue vaccine। okay, so we have a tetravax dengue vaccine, and we have another subunit vaccine, that is your DSV4 tetravalent dengue subunit vaccine guys। ठीक है, टेट्रावेलेंट डेंगी सब यूनिट वैक्सीन, है ना, ये 2 इंडियन ट्रायल्स हैं, यानी कि इस पे भी ट्रायल्स चल रहे हैं, अभी भी अप्रूव नहीं हुई है ह्यूमन यूज के लिए गाइस। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स में पहले देखते हैं वेक्टर कंट्रोल मेजर्स। वेक्टर कंट्रोल स्ट्रैटेजीज क्या क्या है? तो वी कैन ओके गो विद एंटी अडल्ट मेजर्स गाइस। ठीक है, एंटी अडल्ट मेजर्स मतलब रेसिडुअल स्प्रेइंग विद इंसेक्टिसाइड्स। ओके, यहाँ पे हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जैसे कि DDT, मैलाथायोन, पेनिट्रोथायोन, है ना, ऐसे टाइप के इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। For anti-larval measures, okay, we are making use of your larvicides, okay, okay, larvicides use करते हैं यहाँ पर, and जैसे कि mineral oil हो गया, Paris green हो गया, ऐसे टाइप के larvicides use कर सकते हैं, और we can make use of the biological larvicide, and please never forget the name of this fish, and that is your Gambusia affinis guys। ठीक है, it's a biological larvicide, है ना, बड़े बड़े पॉन्ड्स एंड वाटर बॉडीज के अंदर, ओके, जो स्मॉल वाटर बॉडीज होती है उसमें हम लोग ये फिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट योर लार्वा जो है वो इस पे वो फीड करती है ना, तो thereby it will help you in the reduction of the transmission। and last thing, that is your source reduction guys। ठीक है, source reduction में क्या करना होता है? सिंपल है, it simply means we have to decrease, okay, we have to decrease the mosquito breeding sites, and कैसे possible है? by environmental sanitation, water management, and improvement of the drainage system guys। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीज है, यू आर ओके, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्टली इंडिविजुअल प्रोटेक्शन में क्या करना है गाइस? ठीक है, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन मतलब द रिडक्शन ऑफ योर ह्यूमन मस्कीटो कॉन्टैक्ट। कैसे कर सकते हो? सिंपल है, बेड नेट्स यूज करना है, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स यूज कर सकते हैं, मस्कीटो रिपेलेंट्स का यूज कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो यूज सम प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स ओवर हियर। Understood? All the preventive measures are also clear. Next thing, that is with respect to dengue vaccine guys. Now please remember that dengue vaccine guys is something that is
नॉट अवेलेबल इन इंडिया. ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, ठीक है. नो वन आस्क अबाउट डेंगू वैक्सीन, बट स्टिल आई हैव गिवन अ शॉर्ट detail of what is dengue vaccine, उसका schedule क्या है, उसका dose क्या, how it is prepared. So let's quickly go through what is dengue vaccine. Which vaccine was licensed for the human use? That was the CYD-TDV vaccine. And CYD-TDV vaccine की बात जब मैं करूँ, मतलब it is your chimeric yellow fever dengue tetravalent dengue vaccine guys, ठीक है. ये एक live attenuated vaccine होती है and इसका commercial name जो है that is called as Dengvaxia. Dengvaxia is the commercial name for this vaccine and it is okay developed by Sanofi Pasteur guys, ठीक है. Now when I say it is a live attenuated vaccine, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है. वी आर मेकिंग यूज ऑफ अ लाइव वायरस. ओके, कौन सा वायरस यूज कर रहे हो, डेंगू वायरस यूज कर रहे हैं? नो, वी आर मेकिंग यूज ऑफ द येलो फीवर. ओके, येलो फीवर 17D वायरस को यहाँ पे यूज करते हैं गाइस, ठीक है. इट इज एक्टिंग एज अ वेक्टर, इट इज एक्टिंग एज अ वैक्सीन वेक्टर फॉर दिस वैक्सीन गाइस. ओके, अब इस पर्टिकुलर वायरस के अंदर वी आर इंटीग्रेटिंग द टारगेट जीन्स ऑफ द 4 डेंगू सीरोटाइप्स के टारगेट जीन्स को इंटीग्रेट करते हैं. कैसे इंटीग्रेट करना है? बाय मेकिंग यूज ऑफ सम रिकॉम्बिनेंट टेक्निक. वी इंटीग्रेटेड दिस, ओके, वी आर इंटीग्रेटिंग these genes into the yellow fever 17D virus and this is how the vaccine is prepared. अब ये वैक्सीन अवेलेबल होती है पाउडर फॉर्म में, यानी कि लायोफिलाइज्ड फॉर्म में. Therefore it has to be reconstituted and reconstituting media क्या होता है? तो we are reconstituting it using normal saline guys, ठीक है. नॉर्मल सलाइन के साथ we reconstitute this vaccine. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट इज योर एज ग्रुप. कौन सी एज ग्रुप को ये वैक्सीन दे सकते हैं? तो दिस वैक्सीन इज एलिजिबल फॉर द एज ग्रुप 9 to 45 years and a very important criteria that you should never forget, with confirmed previous dengue infection. ये होना चाहिए, तभी वैक्सीन देना इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज क्या होगा? सपोज इफ द पेशेंट इज नॉट प्रीवियसली इन्फेक्टेड विद डेंगू, ओके, कोई प्रीवियस इन्फेक्शन नहीं है डेंगू वायरस के साथ, एंड ऐसे लोगों को आप लोगों ने डेंगू वैक्सीन दे दिया, तो व्हाट विल हैपन? इट विल एक्ट एज अ प्राइमरी इन्फेक्शन इन दीज इंडिविजुअल्स and ऐसे individuals will become at, they will, okay, be at higher risk of developing severe dengue guys following a subsequent dengue infection. Understood the concept over here? है ना, ये चीज है. शेड्यूल की बात करूंगा तो टोटल 3 इंजेक्शन देनी हम लोग को. एवरी इंजेक्शन इज ऑफ 0.5 ml गाइस, ठीक है. द रूट दैट यू आर गिविंग इज सबक्यूटेनियसली एंड एट 6 months अपार्ट. ओके, 6 months के इंटरवल पे देना है, यानी कि सपोज आपने फर्स्ट डोज दिया 0.5 ml सबक्यूटेनियसली, देन आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 months, ओके, आफ्टर 6 months वी विल गिव द सेकंड डोज. ओके, अगेन 0.5 ml देना है एंड फिर उसके बाद सबक्यूटेनियसली 0.5 ml एंड अगेन अ ड्यूरेशन, ओके, आफ्टर अ गैप ऑफ 6 months वी विल गिव द थर्ड डोज ओवर हियर, अगेन सेम 0.5 ml सबक्यूटेनियसली देना है. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो गए इस वैक्सीन के? व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर दिस वैक्सीन गाइस, ठीक है. ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग, अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी वैक्सीन के लिए, यू कैन नॉट गिव दिस थिंग, ठीक है. नाउ सेकंड थिंग, इफ द पेशेंट इज इम्यूनोडेफिशिएंट, एंड इम्यूनोडेफिशिएंट स्टेट मतलब अगर पेशेंट को एचआईवी है ना, immunocompromised immunodeficient patient, we cannot give this. Now if a woman is pregnant or if the woman is breastfeeding, okay, lactational period में है, so definitely this becomes a contraindication for dengue vaccine guys, ठीक है. So that was all about the dengue vaccine. And with this we have covered all these important topics with respect to dengue virus से लेकर के पूरे dengue vaccine तक. I have covered the complete details guys, ठीक है. So that is it for this session guys. If you found this content useful, then do like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for watching. If you have any questions and queries, do comment down. See you on the next one. Bye bye.